क्या आप जानते हैं क्रूजर मोटरसाइकिल क्या है? एक क्रूजर मोटरसाइकिल अमेरिकन मशीन्स के स्टाइल में बनी हुई एक मोटरसाइकिल है जो कि 1930 से अर्ली 1960 तक रही, जिसमें कि शामिल है हार्ले डेविडसन, इंडियन, एक्सेलसियोर और हेंडरसन। Do you know which is the world's longest canal? The Grand Canal. The Grand Canal, known to the Chinese as Jinghang Grand Canal, a UNESCO World Heritage Site, is the longest canal or artificial river in the world. The Grand Canal forms a vast inland waterway system in the northeastern and central eastern plains of China, passing through 8 of the country's present-day provinces. It runs from the capital Beijing in the north to Zhejiang province in the south. क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली क्रूज शिप कौन सी थी? प्रिंसेस विक्टोरिया लुइस। हैम्बर्ग अमेरिका लाइन के 4409 ग्रॉस रजिस्टर टन का एक जर्मन यात्री जहाज था। उसे पहला पर्पस बिल्ट क्रूज जहाज होने का श्रेय दिया जाता है। Launched on 29 June 1900, it served with Hapag until 16 December 1906 after being accidentally grounded off Jamaica. क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? The Trans-Siberian Railway. The Trans-Siberian Railway यूरोपियन रशिया को रशियन फार ईस्ट से जोड़ती है। 9,289 किलोमीटर्स 5,772 माइल्स से अधिक की लंबाई में फैली हुई ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ये वेस्ट में मॉस्को शहर से ईस्ट में व्लादिवोस्टॉक शहर तक चलती है। डू यू नो व्हाट इज द ग्रेट गीजर? Great Geyser, sometimes known as the Great Geyser, is a geyser in southwestern Iceland. It was the first geyser described in a printed source and the first known to modern Europeans. The English word geyser derives from geyser, G-E-Y-S-I-R. The name geyser itself is derived from the Icelandic verb geysa, G-E-Y-S-A. Do you know what is a blizzard? A blizzard is a severe snowstorm characterized by strong sustained winds and low visibility, lasting from a prolonged period of time, typically at least 3 or 4 hours. A ground blizzard is a weather condition where snow is not falling but loose snow on the ground is lifted and blown by strong winds. Blizzards can have an immense size and usually stretch to hundreds or thousands of kilometers. Do you know how are sedimentary rocks formed? Sedimentary rocks are one of 3 main types of rocks, along with igneous and metamorphic. They are formed on or near the Earth's surface from the compression of ocean sediments or other processes. क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे तेज कीड़ा कौन सा है? दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला कीड़ा कहा जाता है ड्रैगन फ्लाइज को, जिनके लिए कहा जाता है कि वो 35 माइल्स पर आवर 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर सकते हैं। हॉक मॉथ्स, जिनकी स्पीड को 33.7 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नापा गया, वो दूसरे नंबर पर आते हैं। So, dragonflies are the fastest flying insects in the world. Do you know which is the smallest carnivore? The least weasel, Mustela nivalis, is the smallest species of true carnivore, coming from the order Carnivora. They are found across North America, Europe and Asia, primarily in grasslands, pastures and shrubby areas. Least weasels have a long, slender body. Do you know how long are tiger salamanders? Tiger salamanders are approximately 6 to 8 inches, 15 to 20 centimeters long. These amphibians have dark gray, brown or black bodies with brownish yellow markings. Do you know what is the weight of a wild Asian water buffalo?
Wild water buffaloes are larger and heavier than domestic buffaloes and weigh from 700 to 1200 kg. Their head to body length is 240 to 300 centimeter with a tail 60 to 100 centimeter long and a shoulder height of 150 to 190 centimeter. Do you know what are chipmunks? Chipmunks are small striped rodents. Chipmunks are found in North America, with the exception of the Siberian chipmunk, which is found primarily in Asia. क्या आप जानते हैं कि बैट्स या फिर चमगादड़ अपने खाने को कैसे लोकेट करते हैं? जब वो उड़ते हैं तो उड़ते वक्त वो कुछ आवाज़ बनाते हैं, कुछ चीखने की आवाज़ निकालते हैं और इस चीखने की आवाज़ की जो गूंज होती है वो लौट कर उनके पास आती है और उस बात की उन्हें इन्फॉर्मेशन देती है कि आगे क्या चीज़ आने वाली है, क्या खाना आने वाला है। और उन्हें इस बात का भी पता चल जाता है कि उस चीज़ का क्या शेप है और क्या साइज है। और खाना ढूंढने के सिस्टम को एको-लोकेशन कहा जाता है। Locating things by their echoes. Do you know who designed the first laptop? The first machine that looked like today's laptops, flat screen in a clamshell design over the keyboard, was the grid compass. British designer Bill Moggridge created it in 1979 and it was actually manufactured in 1982. Please subscribe to my channel, like this video and share it with your companions. See you in the next video.